So I am a doctor. I'm one of the most ill-focused people in the history of mankind. I did my MBBS from a small village in Tamil Nadu, and I'll share my story of 4 disorders in a medical language. So I have 4 disorders of my life: the DVD, the BBE, the APS, and the FNP. Now, what do these mean? Next slide, please. The DVD, the developmental verbal dyspraxia. अब कहानी ऐसे है कि जब मैं पैदा हुआ, आई हैड दिस कंडीशन कॉल्ड डेवलपमेंटल वर्बल डिस्प्रैक्सिया, जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं तोतलापन, जहां पर जो अल्फाबेट आर होता था वो मैं ग के रूप में बोलता था. दैट मेंट माई नेम रितेश वेंट एज गितेश, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपल इन माई फैमिली हैव देयर नेम स्टार्टिंग विद आर. My father Ravi went as Gavi, my mother Renu went as Genu, my sister Ridhima went as Gidhima, and हमारे जो नौकर साहब भी थे ना, उनका नाम था रामू, और वो भी मैं बोलता था गामू. Now this led to the second disorder of my life called BBE. I'm from DPS Mathura Road. People think it's a very good school. I differ. BBE is bullied by everyone syndrome. I was a dark, stunted, very thin and totla boy in my class. And हमारे यहाँ पे हाउस रूम पीरियड होता था, जब क्लास टीचर आके अटेंडेंस लिखती थी. डेली क्लास में सुबह सुबह बच्चे आते थे मेरे पास और पूछते थे, यार तेरी मम्मी का नाम क्या है? तो मैंने कहा कल तो बताया था. तो कहते क्या है? मैंने कहा गेनू. तो फिर सब हंसते थे. नाउ इफ दीज 2 disorders were not a problem in my life, I had this third disorder which is very prevalent in countries like India and China, Asian Parent Syndrome, APS. हमारे यहाँ पे एक ये कल्चर है, इंडिया में ये बहुत प्रिवेलेंट है. एक कल्चर है जहां पे आपके माता पिता डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है. वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैंगरू पेरेंटिंग, जहां पे दे फील सिक्योर इन देयर करियर एंड दे पुश यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो मैं एक पंजाबी फैमिली से हुए, फ्रॉम वेरी हम्बल, वेरी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अ पंजाब विलेज कॉल्ड खन्ना. मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था. आई हैव 37 डॉक्टर्स इन माई फैमिली एंड इट्स अ क्राइम नॉट टू बिकम अ डॉक्टर. In 9th class, when I went to my principal, Shri M.I. Hussain, DPS Mathura Road, and I told कि सर डॉक्टर नहीं बनना, माँ बाप बहुत फोर्स कर रहे हैं कि यार 11th-12th में मेडिसिन लेनी है, और इतना फोर्स कर रहे हैं कि मैथ्स भी नहीं लेने दी. प्रिंसिपल साहब ने कहा उनकी गलती क्या है यार, तुम्हारे पापा 50 मरीज देखते हैं एक दिन में, तुम 100 देखोगे, तुम्हारे जो बेटा पैदा होएगा वो 150 देखेगा. देखो जनरेशन पर जनरेशन कितनी ग्रोथ हो रही है. सो आई फेल्ट लाइक शिट. आई सेड डूड, आई डू नॉट लाइक बियोलॉजी, बट टुडे आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू बीइंग अ डॉक्टर. द 4th disorder ऑफ माई लाइफ, द FNP. दिस इज वेरी प्रिवेलेंट इन इंडिया. सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर. दिस इज कॉल्ड फेस नॉट प्रिटी सिंड्रोम. अब this is something you can see, obviously. I'm not the most handsome person in the auditorium right now. So but होता क्या है, हमारे ना देश के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं बॉलीवुड. जब मेरा प्यूबर्टल टाइम चालू हुआ, so what happened that movies like Josh came, where Chandrachud Singh started romancing Aishwarya Rai. Then in my college days, a movie called Endiran, Robot came, where Rajnikant started romancing Aishwarya Rai. तो आप सोचते हो साले अगर ये लोग ऐश्वर्या राय को डेट कर सकते हैं, तो आप क्लास की सबसे सुंदर लड़की के पास जाके उसको प्रपोज क्यों नहीं कर सकते हो? एंड दिस लेड टू द फेस नॉट प्रिटी सिंड्रोम, विच इन रियलिटी बॉलीवुड सक्स बिग टाइम. नाउ हाउ आई मैनेज दीज 4 disorders is a beautiful story. The first one, today I can say are much better than any one of you. So when we went to a speech therapist, उस टाइम पे अपोलो इंद्रप्रस्था में मेरे डैड मेरे को लेके गए, और स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा यार इसका है ना इतना ज़्यादा तोतलापन है, ये ठीक नहीं हो सकता. फॉर 6 hours every day, my dad and I used to do this exercise called और पहले मैं बोलता था ग, और वो धीमे धीमे कोशिश करके. टुडे आई स्पीक एट प्लेटफॉर्म्स लाइक TED. आई टेक अ समर क्लास एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, and this is not to brag, by the way. The second one, he's Ankush. He used to bully me a lot, and today he's one of my employees. The third one, he's my dad. He's my mentor. He's the one who's actually helped me through all my crisis in life. He's been my life coach. He's also planning to start up December of this year. So I was able to convince my dad कि यार
हम भी स्टार्टअप चालू करते हैं। द फोर्थ वन, अब यार सब कुछ आप ठीक कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज योर फेस, चाहे कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, साला काला गोरा नहीं होता। अब in a country like ours, being dark is a crime. So I proposed, and this is an honest figure, honest to God, I proposed 19 girls, 15 domestic, 4 international, and 19 of them rejected me. So इसका एक मैसेज ये है कि कोशिश जो है ना वो हमेशा करते रहो। एंड द 20th वन इज दिस, शी इज सिटिंग राइट हेयर एंड शी इज much hotter, much better in terms of nature than the other 19. So okay, after that, after doing my MBBS, किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करके 6-7 महीने मॉम डैड से मांगे कि I want to start a startup. We started an app called Alive, which was taken over by Times of India. Post that realized, अब हमारे देश के अंदर what happens is that once you have capital, we cannot take decisions. हम लोग है ना, as a family we take decisions. So हमारे यहाँ पे ये लड़ाई हुई कि यार ये वाला पैसा, my dad told कि यार रियल एस्टेट में डालना चाहिए, my mom told गोल्ड लेना चाहिए, and I told नहीं यार देश के अंदर स्टार्टअप्स बनाने चाहिए. We are the youngest nation in the world. The kind of opportunities that we have, bloody 40% of workforce of Facebook is Indian, and when it comes to startups, the quality of our startups was very poor when I started up. So our mission was very simple. We've invested in 43 startups. We don't invest a lot of capital. We invest 10 to 25 lakh rupees, but in budding entrepreneurs. It was a company called Josh Talks. They just started up 3-4 years back, and today they are India's largest platform for inspirational talks. A company called Vitifeed, their Alexa rank was 11 2.5 months back. They are more popular than Instagram, and they are world's largest competitor to BuzzFeed. A company called Pumpcart. I'll tell you the story later on. So the idea is India is a nation where we are the largest population for Facebook. The kind of opportunities that we have. If you have an idea कि नहीं यार इंडिया के अंदर स्टार्टअप करना है, एटलीस्ट ट्राई इट वन. So my idea of starting up was that I loved real estate, I loved technology, and I thought that let's create a place for all the budding entrepreneurs to come together and actually build India in terms of a technological mecca of the world. So we started our first campus in Innovate CP. उसके बाद I was a part of Y Combinator 2016 in the summer school campus, and वहाँ पे we realized that one thing which was missing in us was the fact that हम ना बड़ा नहीं सोचते. हमें एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि हमें बड़ा सोचना सिखाया ही नहीं है. द मोमेंट आई वेंट देयर आई रियलाइज दैट उन्होंने कहा यार तुम छोटे छोटे 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट कैंपस से क्या करोगे, दैट यू मेक अ लार्ज कैंपस. So as we talk today, we are India's most design-oriented co-working player. 13 campuses, 4,000 co-workers, and our idea is to head-on compete with international companies like WeWork and make sure that in India, at least, we are the largest and the most design-oriented and the most productive workspace. Next one, please. Next. Okay, so a very interesting thing. A lot of people ask me, how do you become successful entrepreneurs? The idea is very simple. What teachers teach you in school, do not follow that. You have to understand one thing. It's पहले एक 1970s का कॉन्सेप्ट आया कि IQ अच्छा होना चाहिए. IQ पे आपका कंट्रोल नहीं है, ग्रे मैटर भगवान ने बना के दिया, यू कैन नॉट चेंज दैट. उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि EQ अच्छा होना चाहिए, लोग आपके साथ आपको बात करने की तमीज़ होनी चाहिए. 2020 is the era where a new concept is coming in social sciences, and that's called TQ. जितने भी successful लोग हैं, they're not from Harvard. मतलब I just did a small research which I'll be sharing after this slide. The idea is trust quotient. आप कितने honestly, कितने ethically business करते हो, that will determine your success. Trust quotient is something which is going to be the next big thing in the world. So 3 things which will help you become an amazing entrepreneur or even an amazing employee at a large company. First is your EQ or your TQ, your skill
constant upgradation of skill. And I'll share two examples with you जहाँ पे CEOs ने अपनी skills नहीं बढ़ाई और $84 billion से $2 billion की valuation में आ गए. And the last one is grit, your patience, your perseverance, making sure कि ना डटे रहो वहाँ पे. That is the most important thing. Why did India win 1984 Operation मेघदूत का जो सियाचिन की लड़ाई थी? सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे ज़्यादा हमारे जवान वहाँ पे डटे रहे, जो पाकिस्तानी जवान नहीं डटे रह पाए. Next one please. So very interesting. A lot of parents come to me and they ask कि यार passion क्या होता है, कैसे पता चले कि हम क्या बनाएं. So this is a Venn diagram which will change your life. 3 circles of life. The first one is what I do well. बच्चा क्या अच्छा करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है. और आपको बड़ा अच्छा मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे टीचर ने पूछा आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैशन की आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, what I do well and all those things. पता कैसे चलेगा कि क्या बच्चा क्या अच्छा करता है. मैंने कहा मैम आप है ना, आपकी पता है क्या गलती है, आप किताब का पहला पेज देखते हो, आप बच्चे का लास्ट पेज देखो जहाँ पे वो स्क्रिबलिंग कर रहा होता है. कोई बच्चा गाड़ियाँ बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है. एंड trust me, you will find you have answers on those last pages of books. The idea is see what your child does well. What I want to do, बच्चे का क्या ambition है, उसको निहारना is very, very important because you bloody work 10 hours a day and just imagine, if I was a doctor, I would have sucked being a doctor. मेरे को पसंद ही नहीं है यार एक छोटे से कोने के अंदर बैठ के 100 मरीज दिन का देखना. That is not something which I am passionate about. भगवान ने हर आदमी को कुछ ना कुछ ऐसी स्किल दी है. अगर कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं है ना, वो गलत जगह पे है इस वक्त. The third one is what will people pay for. कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए एक्चुअली एक प्राइस पॉइंट है. जो लोग फेल होते हैं ना पैशन फॉलो करते हुए, वो ये नहीं देखते कि व्हाट विल पीपल पे फॉर. दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेंटर ऑफ दीज आर यूनिकॉर्न्स लाइक उबर, लाइक ओला, लाइक कंपनीज लाइक WeWork, which actually focus. Inspiring story. One of our portfolio companies called Pumpcart. He came to me 2 years back and he said कि यार I want to sell pumps online. I said, are you nuts? पागल हो गया यार तू, पंप ऑनलाइन, पंप खरीदता कौन है आजकल. एंड आई वाज अमेज्ड टू नो, इंडियन स्टोरी, 27% of agricultural output depends on water and water comes from pumps. This man has democratized pumps. Pumpcart.com is the largest selling pumps company worldwide. छोटा सा एक आइडिया एंड टुडे ही इज मेड अ multi-million dollar company. इंडिया में ना यू डोंट थिंक ऑफ कॉपीइंग द आइडियाज फ्रॉम द वेस्ट कि यार उबर ने टैक्सी बनाई तो हम लोग भी ओला बना देंगे. एंड दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट डू दैट. द आइडिया इज देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. डू यू नो व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? एग्रीकल्चर. It's a large, huge industry. Second is healthcare. उन दोनों के अंदर कोई इनिशिएटिव ही नहीं दे रहा. अगर आज हम लोग अपने आप को देखें, in agriculture there's such a huge potential. The idea is we need to create our own national industries. This is very interesting. How many of you know of this lady called Sarah Blakely? So she runs an intimate undergarments company called Spanx. इसकी इतनी interesting story है. She came in as one of the speakers and I was so impressed by her. What she did was, US के अंदर there's an undergarment for ladies called pantyhose. So what used to happen, nylon का होता था, आगे तक जाता था, आगे 5 digits तक. इसने एक पेटेंट करवाया छोटा सा, बिकॉज आगे तक जाता था, पाँव का जो पसीना होता था ना, दैट यूज्ड टू बी वेरी मेसी. शी जस्ट कट टिल हाफ ऑफ द एंकल एंड शी गॉट अ पेटेंट ऑन दैट एंड कन्वर्टेड नाइलॉन इनटू कॉटन. This is her story. $1.14 billion net worth as we talk today. जब आपके ideas अपने खुद के होते हैं, that is the place where you actually work. I'm running short of time. I really need to. Next one, please. Okay, do not copy. How many of you know of these websites? You know of them? Great. Do you like any of them? Great. Do not go to China, by the way. China के अंदर ये सब के सब banned है. So never copy. Why? We are not China. Mark Zuckerberg 4 साल चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लगा हुआ है. चाइनीज बंदी से शादी कर रही है यार कि मेरे को चाइना में एंटर करने दो. इट्स अ लार्ज मार्केट. अपॉइंटमेंट नहीं मिली. हमारे प्रधानमंत्री, सॉरी आई एम अ डाई हार्ड मोदी फैन दो, बट हमारे प्रधानमंत्री मेनलो पार्क जाते हैं, उसको जादू की झप्पी देते हैं और कहते हैं यार इंडिया में और पैसा डालो. हम लोग कैसे फेसबुक बनाएंगे अगर इतना ज़्यादा कैपिटल डंपिंग होएगा. नेक्स्ट, दैट इज वाई डू नॉट कॉपी एंड दैट इज द रीजन. Amazon and Alibaba, Amazon के सामने प्रोडक्ट है ही नहीं. Amazon is an amazing product. The challenge is policies in China. That is why do not copy. The moment policies change, you will go out of market. And that is why in India, Flipkart had to sell it to Walmart. Compete ही नहीं कर सकते because capital dumping is huge. Next one. Next. I'm running short of time. Next.
Have you heard of a company called Kodak? 1981, one of the largest companies in the world, and photography, it was huge. What happened? CEO को एक मैसेज मिला कि यार सोनी डिजिटल कैमरा निकाल रहा है. Everyone was shocked यार कि डिजिटल कैमरा सोनी निकाल रहा है. CEO said यार कोई बात नहीं, एक रिसर्च कर लेते हैं. रिसर्च में it came, there's a good thing, there's a bad thing. The bad thing is that digital cameras are going to take over your business. The good thing is we have 10 years for that. Kodak did not prepare for that, and today it's a busted company. Do you know these people? They are the founders of the BlackBerry. 4 दिन का outage, just 4 days BlackBerry Messenger, and WhatsApp was a sucky product. No one used to use WhatsApp. Those 4 days changed everything. Cross-platform messaging, WhatsApp, and उस दिन से WhatsApp का growth was insane. Just 4 days, and $84 billion से लेके today it's not even $1 billion. No one talks about BlackBerry. This is very important. This is called the alchemist mindset. Did a research on 100 most, wanted to understand यार कि ये कौन लोग होते हैं जो बहुत powerful, बहुत wealthy हो जाते हैं. Are they from Harvard? So it's a very interesting study. 27 are heirs. That means सिर्फ 27 लोगों को माँ बाप ने पैसा दिया. 73 of them are self-made. Out of these 73, 18 have no college degrees, 36 are children of poor, and the rest are both. Now, what are the skills which make a person successful? It's not bloody. Honestly speaking, बाबर कब मरा था उसके लिए मेरी हिस्ट्री टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे आज तक याद है. It doesn't add any relevance in my life. I need to know why did Babar did what he did. We have to go away from the concept of ratification. This is called the alchemist mindset. This is something which I have just compiled for my own team's sake. All these people take action. They are ये कोशिश करते हैं, ये action लेते हैं. L stands for learning. All of them, they don't see that the glass is half full. They see glass is empty. They learn from each and every one. C stands for confidence. They are humble, but at the same time उनमें एक जुनून और कॉन्फिडेंस होता है. H stands for humility, plus they hustle a lot. E stands for enthusiasm. इनमें से किसी भी आदमी को आप देख लो, they are always enthusiastic. They are like a baby, always optimistic कि यार अच्छा ही होगा. M stands for majestic dreamers. ये बड़ा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते. I stands for innovators. BlackBerry, Kodak, इन्होंने innovation नहीं की. आज जो business innovate नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं चाहे एक छोटा सा रेडी वाला भी हो, he has to innovate because technology की वजह से things are going very very fast. Strategic thinkers, they have only 3% of the world writes their goals. My only request to all of you is write down your goals, your 5-year goals, your 3-month goal, your today's goal. Goal is very important. Present is the biggest present that you have. And the last one is they are tinkerers. Networkers नहीं, tinkerers. Networking होता है cards exchange करना. I usually do not carry my cards. The idea is go and meet people, develop relationships and develop trust. Last, just one thing, एक हरिवंश राय बच्चन की पोएम है, वो सुनाना चाहूँगा. कहता कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कहता नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का साहस रगों में खून बनकर दौड़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है. मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And just last stanza of it, I'm omitting the middle one. वो असफलता के ऊपर है, फेलियर के ऊपर है. कहता असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो. जब तक मंजिल ना मिल जाए नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान कभी ना छोड़ भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.